constitution to regulate the unauthorized deductions and fines. इटा मने रखिबो आर मेन एरिया कवर करी पड़े राइट. मिनिमम वेजेस 1948. So it is the responsibility of the every state government. They should fix minimum wages towards the industry and towards the state, and the organization have to provide minimum wages towards the workers and the labor. Wages आसीगला माने इटी कौन आछि ना it basically minimum wages आमे worker को और labor को देबा जोटा कि हमरो government fix करिछि. Less than that it is not. Basically if the industry cannot provide less than that, right, that to come this minimum wages dei paribo na. So payment of wages act कहूची कि the payment of wages act here while at the time of 1936 this act was applied a person who was getting 1,600 per month. Payment of wages act कहा को applicable होइतिला जो लोक माने जो वर्कर्स जो लेबर monthly 1,600 ड्रॉ करथिले. Likewise since 1936 to 2014 the payment of wages act amended at various time. बहुत time payment of wages act amendment है यसी on the basis of the increase and enhance of the cost of living. Cost of living जेमती enhance ही गला payment of wages मध्य सेमिति बढ़ी तारो eligibility criteria मध्य सेमिति enhance ही गला. So the act again it was amended at the year of 2005 and it was applied a person 2005 रे again एको amendment करा जायतिला जोटा कि जो लोगों को अप्लाई हेतिला ना जो माने 6,500 मंथली ड्रॉ करथिले हैला. देन एटा 2017 रे अमेंडमेंट हैला को लोगों को एप्लीकेबल हैला ना जो माने 2017 रे जेते बेला आसला जो those persons getting 24,000 per month. से अनुसारे 2000 since 1936 रो हमें कहबा वेरियस टाइम अमेंडमेंट हेची हमरो क्राइटेरिया हला वेज क्राइटेरिया हला या फिक्सेशन करा जायतिला बट वेरियस टाइम रे अमेंडमेंट हेची. तापरे 6,500 थिला तापरे 10,000 थिला तापरे 18,000 थिला तापरे 24,000 को आसिला. सो एम्ति करी का आज पर्यंत से आसी पेमेंट ऑफ वेजेस. सो द मेन ऑब्जेक्टिव व्हाट आई टोल्ड यू टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस and the payment of wages it must be well the ensure to provide in a legal tender. Legal tender means what? As per the law, as per the those things adopted by the Indian Constitution that have to adopt by the every organization and the industry. Legally हमें ताको maintain करिबा जोटा Constitution adopt करिछि और time to time amendment करिछि. Preventing arbitrary deduction ता माने कोनोसी प्रकार unauthorized deduction एठी हबो नै. The main objective of this act already I told you no to regulate the fines, unauthorized fines and deductions, and apart from these to basically हमर एठी कोन कहला दुईटा जिंस को हमें कंट्रोल करबा फाइन आउट डिडक्शन and to provide remedy to worker प्रति जदि किछि प्रॉब्लम होची ता प्रति हमें appropriate step नै परिबा. सो सेटा एठी एक्ट रे हमर एक्सप्लेन करा जाय. Act को applicability अछि. The act applied for every establishment, every factory, a railway, every establishment. It extend to the whole of India at the year of 1936 and it applied every establishment. सब establishment को एटा कवर कर मने रखि दबो हैला. तापरे चलंतु पिला माने आमे वेज कोन जानिबा पूर्वरु what do you mean wage and what it including, what is it not including, ए सब जानिबा पूर्वरु first we should know ए जो आमे एठी पढिले what do you mean by fine and to basically control on restricted the fine unauthorized fine and deduction. तो एठी हमको जानिबा को पड़िबो फर्स्ट फाइन कोन और डिडक्शन कोन एटा को जानिले ही हमें एक्ट को कवर करि पारि.
So first we have to know clearly what do you mean by fine, what do you mean by deduction, how much deduction, how much fine the employer should impose towards the worker, and it what condition, co condition रे से ताको impose करिबो हैला. तो dear students, हमर it is generally हम जदि कहिबा फाइन काहे कि हमें दबा, what is the reason of fine, फाइन और डिडक्शन भितरे is there any difference between fine and deduction? आमे कोन सेटा आमे कोन जनरली जनरल सेंस आमे कोन बुझिबा पिला माने एटा कोन फाइन कोन डिडक्शन कोन, एनी आइडिया? मो वेज को डिडक्शन करा गला, मो वेज को फाइन पका गला कोन पाई? फाइन Fine means पेनल्टी टाइप हां किछि हां फाइन माने किछि पनिशमेंट टाइप रो हे कि ना आपन को सेटू माने इंप्लीमेंट करा जाय. ओके. डिडक्शन डिडक्शन होउची माने आपण आस्ति नाहंती तो आपनकर सेई दिनर दरमा काटी दबा कि अलगा कोनोसी पर्पस पे आपन दरमा काटी दबा. अच्छा अच्छा. सो फाइन टे जनरली हमको पक्का जाए कोन पाई ना, फॉर दी पर्पस ऑफ पनिशमेंट, राइट? काहे कि हमें जो भूलटा करिचे, धरंतु हमें रास्ता रे जाउचे, रास्ता रे गले हेलमेट पिंधिने, गवर्नमेंट कोन रूल्स करची ना हेलमेट हला कंपलसरी. हां, दुई जन का हेलमेट पिंधे, फास्ट तो जन का हेलमेट थिला, एना दुई जन मोर देन टू तो बसी परिबनी हैला, दुई जन हैला कैपेसिटी, दुई जन का हेलमेट पिंधिबे. जदि दुई जन हेलमेट पिंधि नथिबो कि जने भी पिंधि नथिबो ताले हमको फाइन फाइन दबा को पड़छ, राइट? सो हमको एठी कोन करा जाउची ना, बेसिकली काहे कि फाइन दिया जाउची ना, फॉर द पनिशमेंट गवर्नमेंट adopted some rules, some law, and for the common people, for the citizen of no India. So it is the basic responsibility of individual, we have to accept it and we have to obey it. If we will not accept it, not obey it, so we have to we have to कोन हमको फाइन दबा को पड़ो. काहे कि थरे जदी फाइन देले ना, थरे फाइन देले सेटा हमें ता परठु हमें चेक करबा कोन रॉन्ग रूट रे गाड़ी नबनी, हेलमेट पिंधिबो, गाड़ी रो पूरा लाइसेंस रखिबो, जेते सब गाइडलाइन रूल्स रखा जायछि, एतिकी स्पीड रे गाड़ी चलेइबो, ताडू अधिक रे चलेइबोनी, ड्रंक एंड ड्राइव हबनी, केते रूल्स अडॉप्ट करिछि, राइट? तो ए सब जदी न मानिबा हमें हमको पनिशमेंट, थरे हमें फाइन दबा ना, सेकंड बेल को हम ऑटोमेटिकली चेक हे जाइते, राइट? तो सेइथि पई हमर आसला फाइन. तो ऑर्गेनाइजेशन रे फाइन कोन कहूची पिला माने, सी फाइन एंड डिडक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, हमें जानी छे. फाइन एंड डिडक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. सी फाइन कोन ना, व्हेन एम्प्लॉय is responsible for some losses to employer. Employee कौन कला, किछि लॉस कर देला employer. Now employer can recover this. काहाडू रिकवर करिवो? By the employer will recover by the workers, employees ताको रिकवर करिवो. ए जो रिकवर करिवो जो अमाउंट ता किछि लॉस कर देली, लॉस कौन करली मैम, लॉस हला मु गोटे कंप्यूटर भांगी देली, छेची देली रागी की हला, लॉस हला कौन करली, स्ट्राइक रे काचो सब भांगी देली, एविडेंस अछि, कैमरा रे रिकॉर्ड हेछि हला. एटा अल्टीमेटली कौन हला, स्ट्राइक रे मशीनरी को बाडे के भांगी देली. अल्टीमेटली it is the losses of the organization, a huge losses of the organization. ना organization तो मोडू रिकवरी करिवो, कारण मु ताकू भांगीची, मु ताकू भूल करची, एई जो रिकवरी करिवो ताको कोन कोआ गेला, जो एक्चुअल अमाउंट रिकवरी करिवो, जो येरो ताको कोन कोआ जिवो, सेई रिकवरी कोन कोआ जिवो, सेटा कोआ जिवो डिडक्शन. एनी अमाउंट अदर देन द डिडक्शन, किछि अमाउंट डिडक्शन परे हैला, any amount other than the deduction, that we can call as a fine. And fine, why the fine is there? To give lesson to the particular individuals. जोटा कि additional amount आमे दबा, सेटा apart from the deduction, जो rest amount दबा ताको आमे fine कहबा, loss fine बोली.
and to teach a lesson to the particular person ताकू कौन कहा गला फाइन कहा गला एंड पिला माने जो फाइन टा कलेक्ट हबो जो हमें फाइन कलेक्ट करिबा फाइन कैनॉट इंक्रीज मोर देन मने रखिबो क्राइटेरिया का जहां जहां हम क्राइटेरिया ना कहि जिबी फाइन कैनॉट इंक्रीज more than 3% of workers, more than 3% of wages of the workers, 3% of the wages of the workers. मु केते वेज पाउची धर धर मु वेज पाउची 18,000 हैला 18,000 टंका 18,000 टंका 3% जहा हबो 3% जहा हबो सेते की ही मु फाइन तमटू नहीं पारि नॉट मोर देन दैट ताडू अधिक मु फाइन कलेक्ट करि परिने एटा काहे के आसिला ना एम्प्लॉयर पनिशमेंट पई मन इच्छा फाइन कलेक्ट करथिले तांकर जहा पार्टी को आसिला से माने सेया कलेक्ट कले पूरा सैलरी स्टॉप कर दोथिले पूरा सैलरी टा पूरा दउ नथिले फाइन पकई दोथिले सो ड्यू टू दिस रीजन 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस आर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन राइट सो सेटू कोन हैला 3% आमे फाइन को इम्पोज करिबा नॉट मोर देन दैट जदि मोर देन दैट कला में मोर देन दैट कला माने अछि आपाई बोली पनिशमेंट अछि आपाई बोली इम्प्रिजमेंट अछि आपाई बोली कोन फाइन अछि किए फाइन दबो एम्प्लॉयर फाइन दबो एम्प्लॉयर पैसा डिपॉजिट करिवो गवर्नमेंट को जदि सेमति किछि भूल कला जदि ता ऊपर एक्शन नेला वर्कर्स राइट एंड सच फाइन कैनॉट बी रिकवर इन ए इंस्टॉलमेंट बेसिस कौन कहला 3% फाइन 18,000 3% को तुमको फाइन पकई 18,000 3% फाइन धर केते 500 केते आसीबो तमर तमे कहबो कि आको मु प्रति मासरे 100 टंका करिकि देबी मो पाखरे पैसा नै सेमति हेई परिबोनी the fine you have to deposit in one time तुम एम्प्लॉयर को सेई मासर ये रे फाइन तुम प्रोवाइड कर दबो राइट एंड फाइन कैन बी रिकवर्ड इन कैश as well as ताको कैश आकार रे आमे रिकवर करि परिबा हैला से कहबो कि नै मु वेज रो मोर डिडक्शन करनी मो फाइन मोर निजे आनि के डिपॉजिट कर देबी हेई परिबो मोर फाइन मोर वेज रो डिडक्ट कर दियो हेई परिबो बट यू हैव टू डिपॉजिट योर फाइन राइट नो फाइन कैन बी कलेक्टेड फाइन हमें काहाडू कलेक्ट करिबानी जदी भी भूल लेछि जदी भी मिस्टेक करिछि काहाडू कलेक्ट करिबानी इफ ए पर्सन is less than 15 years of age it means a child if a child did some mistake then the employer cannot collect fine in case of the child to fine collect he paribo na right and fine whatever may be the fine collected by the employer it should not maintain secret it must be the employer display in a display prominently right kodi prominently karibo through notice the employer must be display prominently how much fine collected by the employer with whom kaha to whom kaha to collect kala kette fine collect kala it cannot maintain secret right and the whatever may be the fine will collect by the employer it must be maintained in a separate record ako separate record maintain kara jibo separate register maintain kara jibo specifically for fine and whatever may be the fine collected by the employer cannot use that amount it is not the employer profit it is not the employer income enjoy karibo paisa nei ki lokon ko to fine collect karibo paisa nei ki enjoy karibo no you cannot use that amount as a employer now where the fine will go the fine will use for the welfare purpose of the workers जो फाइन कलेक्ट हेतिबो सेटा वेलफेयर फंड रे रहिबो वर्कर्स मानकर any kind of necessary the worker they can use that the welfare fund हमर सब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रे अछि सेइत्रे से फाइन को रखा जिवो एंड अर्जेंसी टाइम रे वर्कर मानकर यूज पाई ही सेटा लगा जिवो एटा हला रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नै कि आसिला फाइन तो आमे कहि देले फाइन कोन एमति मन इच्छा पकई दमा हमर जेतला हेलमेट भी होची हमर गोटे फिक्स करा जायछि कोन हमको मु हेलमेट पिनिरी मोर 5,000 फाइन नै जिवो ना कोन सेति पई मु 500 देबे फिक्स करा जिवो सब जगह रे मिनिमम गोटे अमाउंट फिक्स करा जिवो मोर देन दैट यू केही भी कलेक्ट करि परिबेनी मोर राइट सो दिस इज व्हाट द फाइन आ डिडक्शन ताहले कोन डिडक्शन मु कहली
actual amount ଧର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କହିବା ଧର ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 50,000 ଟଙ୍କା ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ପରଚେଜ କରିବା ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 50,000 ତ ମୁଁ କଣ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କଲେକ୍ଟ କରିବ डिडक्शन करिवो मोर वेजेस रु प्रति मासरे मोर वेजेस से काटी देबो सो हाउ आई कैन सर्वाइव हाउ आई कैन फुलफिल माय बेसिक नीड्स सेमिति करि परिबो नाही देखो तमे किनिथिला कंप्यूटर ता केबे 2010 रे कि 2020 रे हैला सो 2020 रे से कंप्यूटर रा प्राइस थिला 50,000 बट नाउ व्हाट इज द करंट प्राइस जदि हमें ताको रिसेल करबा से कंप्यूटर को हां जदि सेतिके हमर माने ये करबा एनालिसिस करबा सो करेंटली से कंप्यूटर रा प्राइस केते होबो करेंटली से कंप्यूटर रा प्राइस फॉर एग्जांपल हैला 30,000 टंका 30,000 सो 30,000 मु प्रोवाइड करी ना कि पूरा 50,000 टंका किनिथिली सेही टाइम रे 10 वर्ष पूर्वरु नाउ मु तमडु 50 सेमती हे परिबो सो करंट प्राइस अनुसार से मोटू कौन करिवो डिडक्ट करिवो मोर अमाउंट बट जते डिडक्शन करिवो मो सैलरी केते मो वेजेस केते पाउची आई एम गेटिंग वेजेस 18,000 फॉर एग्जांपल मु कहूची 18,000 मोर डिडक्शन अमाउंट केते होची 30,000 सो कैन द एम्प्लॉयर डिडक्ट होल माय वेजेस फॉर इन ईच मंथ नो एई मासरे कोन कर देला मोर 18,000 काटी देला कमिंग मंथ रे रेस्ट ऑफ द अमाउंट 18,000 बाकी जातिला काटी देला ताले 2 मास डिडक्ट करला ताले 2 मास मु सस्टेन केमति करी हाउ आई कैन मेंटेन माय फैमिली हाउ आई कैन सस्टेन इन माय सेल्फ सो सेटा तमे करि परिबो नाही ताले किते परसेंट तमे डिडक्ट करिवो ना मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड कला if the industries if the organizations are belongs to the cooperative society organization जदि ऑर्गेनाइजेशन ना को कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करंती ताहले द डिडक्शन मस्ट बी 75% of the wages if the other than the cooperative society को छाडिला परे बाकी जिते एस्टैब्लिशमेंट अछंती जिते जिते इंक्लूडिंग एवरी एस्टैब्लिशमेंट so there we can collect we can deduct the amount 50% of the wages ता माने किते हैला पिला माने 18,000 जो मु पाउची 18,000 रो 50% न दुने 18 9,000 मोर डिडक्शन हबो तो ए मंथ रे 9,000 डिडक्शन हबो I will recover 9,000 this month and subsequently remaining amount I will deduct in the different month आर मासरे आउ 9,000 तापर मासरे 30,000 कंप्लीट हवा पर्यंत मु कोन करिवि सेही अमाउंट को प्रति मंथ रे डिडक्ट करिवि हैला सो ए अनुसार डिडक्ट करिकि मु कोन करिवि ना रिकवर करिवि वर्कर्स टू सेही मोर जति कि से डैमेज आउ लॉस करथिला ऑर्गेनाइजेशन so this is the criteria dear students towards the deduction and fine towards the payment of wages act 1936 बुझी गलो कि पिला माने ना किछि डाउट अछि पिला माने हेलो स्टूडेंट्स नो मैम डाउट पूरा क्लियर ना जहा कहली सुनुचो तो ध्यान से ध्यान रे सुनिबो गोटे गोटे क्राइटेरिया हां तापरे चलो व्हाट डू यू मीन बाय वेज आमे इठी वेज काहा को कहबा as per the 1936 payment of wages act wage means any remuneration lekha ichi wage means any remuneration whether the way of salary allowances or otherwise it expressed in terms of money kon kochi wage means any kind of remuneration it may be salary it may be allowances or it may be otherwise I am getting सेटा कहा को टर्म करथबो मनी को टर्म करथबो वेज इट इंक्लूडिंग वेज कहा को वेज कोटा हमें इंक्लूड करबा कहा को हमें एक्सक्लूड करबा कोटा कोटा वेज रे हमर इंक्लूड हेई का जीवो एनी फर्स्ट पॉइंट कोन कहूची एनी अवार्ड सेटलमेंट सी एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ता माने फर्स्ट पॉइंट कोन कहिला
धर पार्टी पार्टी किए किछि गोटे डिस्प्यूट थिला बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट किछि गोटे डिस्प्यूट थिला बोथ दी पार्टी भितर किछि गोटे डिस्प्यूट थिला कोर्ट ऑर्डर देला कि मैनेजमेंट को नो यू हैव टू गिव दिस मच ऑफ वेजेस टू दी वर्कर्स एति कि तमे वेजेस सेटल करिवो धर धर मोर 10 वर्ष ला इंक्रीमेंट हेई नथिला मते एटे टाइम इंक्रीमेंट मिलिला कि 10 वर्ष ला मोर कोन गोटे पेंडिंग थिला मते मिली नथिला कोर्ट ऑर्डर देला ना तू सब आगे ताको रिकवर प्रोवाइड कर এই जो अमाउंट टा मते मिलिबो व्हाट एवर मे बी द अमाउंट आई विल गेट it can called as a wages as per the order of the court as per the law right any overtime any holiday or any leave period see overtime हमें मिनिमम कितने घंटा काम करछे 8 आवर more than 8 hours if I'll spend towards the organization I will get one wages extra गोटिए वेज सेडी मु एक्स्ट्रा पाइबी हैला जदी मोर देन 8 आवर मु काम करूची तार अछि मिनिमम केते मैक्सिमम केते सब फैक्ट्री एक्ट रे लिखा छै मु से सब कवर करलिनी हैला तो जदी मु मोर देन 8 आवर करूची ताले मते वन वेजेस एक्स्ट्रा मिलिबो तो मोर गोटे वेज रो रेट केते 500 मु एक्स्ट्रा काम कले मते एक्स्ट्रा केते मिलिबो आ गोटे 500 मिलिबो वन वेजेस एक्स्ट्रा तो सेठी मु केते कोन करिवि ना सेई जो ओवर टाइम रो पैसा पाइले दैट इट कैन कैलकुलेट एज ए वेज एनी हॉलिडे संडे मु जाउनी सेकंड सैटरडे मु जाउनी हैला सपोज मोर हैला कोन होली हैला दिवाली हैला जत्ते सब फेस्टिवल जत्ते सब हॉलिडे नेशनल हॉलिडे स्टेट हॉलिडे लोकल हॉलिडे एंड व्हाटएवर मे बी द हॉलिडे मुझे जाउनी ऑर्गेनाइजेशन कोन मोर डिटेक्ट करछि कि से अमाउंट को मते प्रोवाइड करछि सो दैट अमाउंट आल्सो वी कैन कैलकुलेट एज ए वेज और एनी लीव पीरियड लीव मु रहिली सिक लीव रहिली सीएल रहिली ईएल रहिली कितने प्रकार लीव मु माने अवेल करूछि so whatever may be the things no I'm taking it may be the EL on leave it may be the CL casual leave or it may be the sick leave no so basing on these the organization cannot deduct the amount and that we can calculate as a wage right any additional remuneration like bonus जो हमको जो बोनस टा मिलु छ एडिशनल रेम्युनरेशन रे कि अदर किछि गोटे हमर तारो ना एडिशनल रेम्युनरेशन वी आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम बोनस आल्सो वी कैन कैलकुलेट एज ए वेज एनी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन रे कोन हैला ना टर्मिनेट करा गला काहा को एम्प्लॉय को टर्मिनेशन मो कहितले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रे टर्मिनेशन को जदी कर देला दैट इज अ फॉल्ट बाय द इंडस्ट्री फॉल्ट अछि इंडस्ट्री वांट टू क्लोज डाउन द प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नाउ हियर पूरा बंद कर दबो तो सेठी कोन करिवो ना बिफोर क्लोज डाउन द प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट द इंडस्ट्री हैव टू पे 3 मंथ वेजेस एडवांस वेजेस टू द वर्कर ए जो 3 मंथ्स हम एडवांस वेजेस रिसीव करले सेटा को हमें कोन कहबा सेटा को हमें वेज बोली कहबा टर्मिनेशन से काइंड टाइम रे हैला और एनी स्कीम बाय द लॉ अनुसार जदी हमें किछि फैसिलिटी पाउचे ताहाले मध्ये हमें सेटा को वेज बोली इंक्लूड करबा ए सब आसीबो इंक्लूडिंग वेज ताहाले एक्सक्लूडिंग कोन रहिला ना एक्सक्लूडिंग रहिला कि एनी हाउस accommodation it means supply of light water medical attendance any kind of amenity any kind of facility provided by the industry provided by the organization towards the worker that cannot include as a wage ताको हमें वेज रे इंक्लूड करिबा नहीं ए सब को वेज रे कैलकुलेट बने देखे तते मु लाइट पाई कहि के एतिकी पैसा तोर ये करा जायतिला हां मु तते कोन कहिथिले पियोन गोटे देथिले सेतिकी पैसा ता से सब पैसा कोन इंक्लूड हबनी सेटा तोर वेज रे कैलकुलेट हला से सब वेज रे कैलकुलेट हे परिबो नाही any contribution towards pension or provident fund any contribution जो हमर provident fund रे जो हमको आसुची पर मंथ हमर जो डिडक्ट होची provident fund को केते परसेंट होची कोन होची that we will discuss in the provident fund act every month this is a contributory provident fund something provided by the employer and some deduction by the employee every month सेई जो डिडक्शन ता सेई जो पेंशन फंड को जाउची प्रोविडेंट फंड को जाउची हमर पैसा सेटा को हमें वेज बोले कैलकुलेट करबा नाही एम्प्लॉयर जोटा कंट्रीब्यूट हमको करूची हैला एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस मते किछि देला राइट तो सेटा को मध्ये हमें वेज बोले डिडक्ट करबा नाही एनी ग्रेच्युटी जो हमको देला आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एक्ट रे पडिबा सेटा मध्ये वेज बोले इंक्लूड करबा नाही सो वेज कोन इंक्लूड करबा वेज कोन इंक्लूड करबानी एटा को इथे मन रखिबो इन द पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 now who is responsible मैम आउट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउट के कोइ देखि
टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है धर इंडस्ट्री कौन कला तुमको टर्मिनेट करदेला दीटा जिनस ये अच्छी कौन दीटा इंडस्ट्री विल टर्मिनेट टू यू बिकॉज यू डिड सम मीन्स व्हाट मिसकंडक्ट इन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तमर भूल दीटा दीटा क्राइटेरिया मन रख तमर भूल अच्छी तमर भूल कौन फ्रॉड कल वॉलेंस कल थेफ्ट कल मिसकंडक्ट कल हाँ ए सब काम कल तो तुमको टर्मिनेट करिवार पूरा राइट्स अच्छी इंडस्ट्री रो तुमको कौन सी बेनिफिट से इंडस्ट्री प्रोवाइड करिवो ना किछि करिवोनी तुमको क्विक एक्शन नै कि क्विकली तुमको हाँ रिमूव करि परिबो इंडस्ट्री सेठी कौन से फैसिलिटी मिलिबो बिकॉज द फॉल्ट इज योर्स राइट किंतु जदि इंडस्ट्री रो किछि फॉल्ट रहिला इंडस्ट्री वांट टू क्लोज डाउन द बिजनेस कि इंडस्ट्री कौन करुची इंडस्ट्री रो कौन से कारण रो इंडस्ट्री कौन करुची इंडस्ट्री वांट टू स्क्वीज द स्क्वीज द बिजनेस स्क्वीज करबा को चाहूची तो सेठी कौन करबो स्क्वीज एते प्रॉफिट होनी मो स्क्वीज कर देबी ताले लोकन को बाहर करबो सेठू पूरा बंद करबो लोकन को बाहर करी क्लोज कर दबो स्क्वीज करबो क्लोज करी परिबो और मेन पावर को बेसिकली स्क्वीज दी मेन पावर को मु कमेबी सेठी मध्ये टर्मिनेट करबो এই सब केस रे जदी इंडस्ट्री दैट इज अ फॉल्ट बाय द इंडस्ट्री सेटा तो मोर किछि भूल नाही तो सेही केस रे इंडस्ट्री कोन करबो बिफोर माने एडवांस 3 मंथ नोटिस दे कि तुमको संगे संगे इंद राति राति तुमको रिमूव कर देबनी 3 मास रो नोटिस दबो दे कि तुमको कोन करबो एडवांस 3 मास रो सैलरी प्रोवाइड करबो हैला सो जो एडवांस जहां तुम सैलरी पाउथल जो एडवांस 3 मास सैलरी तुमको प्रोवाइड करबो बेसिंग ऑन दिस you can within 3 months you can search your alternative तापरे तमे सेठी आसी कि तमे 3 मास तो तम पाखरे पैसा अछि आराम रे खाई की रही कि 3 मास भितरे तमे तमर अल्टरनेटिव सर्च कर पारि सेही जो पैसाटा तमे पाइबो एडवांस 3 मंथ रो वेजेस सेटा को कहा गला कोन सेटा वेज रे कैलकुलेट हबो बुझिलो एना बुझिलो Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके तापर आसिला कोन responsibility for payment of wages किए responsible obviously organization employer responsible for the payment of wages akon ame jai ki daba na kon employer is responsible for the payment of wages मन रखियो हैला fixation of wage तो fixation ame wage ता केमिति fix करबा पिला माने what is the criteria to fixing the minimum wages see dear student the wage can be fixed wage को ame fix करि परिबा the wage must be fixed daily basis weekly basis fortnightly basis monthly basis सबु पीरियड रे हमें वेज को फिक्स करि परिबा बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 मंथ वेज हमें 3 मास को थरे दबा हे परिबोनी वेज हमें 6 मास रे थरे सेटल करबा हे परिबोनी तमे डेली सेटल करि परिबो वेज को डेली आसले काम कर देलो पैसा दे देलो डेली सेटल करि परिबो वीकली सेटल करि परिबो once in 15 months सेटल करि परिबो मंथली सेटल करि परिबो बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 मंथ कौन कहूची फिक्सेशन ऑफ वेज एई अनुसार तमे वेज को फिक्स करिबो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस को टाइम रे तमे वेज को पेमेंट करियो तमे तो डिसाइड कर देलो कि व्हेन यू हैव टू प्रोवाइड वेजेस once in a month once in a 15 days once in a week केमिति वेज सेट करिवो एज अ एम्प्लॉयर यू हैव टू डिसाइड इट देन जेते बेले तमे वेज पेमेंट करिवो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस कहूची देखो इटी लिखा जाईची wage to be paid before 7 days if a person employed less than 1000 wage must be paid before 10 days if a person employed more than 1000 आ माने कोन मु ध्यान कहूची ध्यान रे सुनिबो देखो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे 1000 रु कम लोक अछन 1000 रु कम लोक काम करछन हैला ताहा हेले कोन प्रति 7 दिन रे थरे वेज फिक्स करिवो इंडस्ट्री ना ता माने सेया नु एडी एम्प्लॉयर डिसाइड करिवो केते दिन रे से वेज प्रोवाइड सेटल करिवो वर्कर्स मानकर इंडस्ट्री डिसाइड कला कि वर्कर्स मानकर वेज पर मंथली वाइज मु सेटल करिवि हैला तो लेस देन 1000 वर्कर्स 1000 मींस 800 900 लोक काम करथिबे दो to settle the wages huge amount of workers are working in that particular place and I have decided I will give wages once in a month so
मंथ केबे हमर एंड हला धर 30th को मंथ एंड हे गला 30th परे एना को मास चलछि रे मे 30 एप्रिल रे हमर मंथ एंड हे गला हला 30 एप्रिल टू आज हला केते तारीख 6 तारीख 7 तारीख काली 7 तारीख हबो हला 7 तारीख 7 तारीख भितरे मु कोन करबी आई हैव टू सेटल वेजेस टू द वर्कर्स त माने मासर नेक्स्ट 7 तारीख आसीबो से भितरे मु वेज सेटल करबी ना कि मो इच्छा रे 10 दिन परे 15 दिन परे 2 मास परे 5 मास परे दउथिबी ना 7 तारीख भितरे सेटल कर काई 7 तारीख पर्यंत दिया हला धर लास्ट मोमेंट रे को लोक लीव नहीं गला लास्ट मोमेंट रे के आसीनी लास्ट मोमेंट रे कार गोटे कोन के गोटे अमाउंट ये नेला के गोटे कोन फाइन आसला के डिडक्शन आसला सेति पे लास्ट पर्यंत हमें वेट करबा 7 दिन ग्रेस पीरियड रहिबो सेही 7 दिन भितरे हमें सेटल करिया सेम थिंग्स वी कैन अडॉप्ट इन केस ऑफ द पीपल आर वर्किंग मोर देन 1000 इन द पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट तो 1000 रु अधिक लोक काम करचंती 10 दिन 30 रे हमर डेट सरी गला 30th हे गला तार 10 दिन कहीं 1000 रु अधिक बहुत लोक काम करचंती हमको तो जनजनकर कैलकुलेशन एनालिसिस करबा बायोमेट्रिक बाहर करबा अटेंडेंस बाहर करबा एनालिसिस करबा हम तो टाइम लागिवो ना सो सेति पे हमको तो 10 दिन दरकार ना टाइम 10 दिन भीतर ता माने ना कि पूरा 10 दिन ही दबो ना तार गोटे दिन ही पारे 2 दिन ही पारे 3 दिन ही पारे 4 दिन ही पारे बिफोर 10 डेज बिफोर 7 डेज भितरे तमे वेज को सेटल करी टाइम पेमेंट ऑफ वेजेस हैला जदी गोटे लोक को तमे टर्मिनेट कर दोचो इफ यू टर्मिनेटेड द एम्प्लॉय टर्मिनेट कर देलो एम्प्लॉयमेंट रो ताहले तमे कोन करिवो ताको बुलैबो काली आज तो बेस्ट सेटल करची नो whatever may be the termination amount whatever may be the earlier amount whatever may be the things you have to settle within 2 days 2 working days भितरे सब सेटल कर देबे जदी सेटा संडे पड़ी गला ताहले मंडे सेटल करिवे हैला सो से अनुसार तमे कोन करिवो वे सेटल करिवो क्लोज डाउन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन जदी क्लोज भी करूचो ताहले भी 2 दिन रे ही तमे वे सेटल करिवो मोड ऑफ पेमेंट तमे कोनोसी आकार रे मध्य पेमेंट देई परिबो जेमति कि इन केस ऑफ चेक इन केस ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इन केस ऑफ कैश तमे कोनोसी प्रकार भी वेज पेमेंट करि परिबो देयर इज नो क्राइटेरिया मीन स्ट्रांग क्राइटेरिया हैला डिडक्शन परमिसेबल जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आसिला तमरो वेज एक्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया जोटा कि फाइन डिडक्शन हमें कहउतिले सो वेज एक्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया हला कोन ना डिडक्शन परमिसेबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑथराइज्ड डिडक्शन सेटा भी पुनी मु कोन कहितिली एम्प्लॉयर मन इच्छा डिडक्शन करि परिबो नाही जहां भी डिडक्शन करिवो सेटा पुनी ऑथराइज्ड डिडक्शन हेतिबो ए सब जो लिस्ट देखुचो दिस आर द ऑथराइज्ड डिडक्शन फॉर फाइन तमे किछि गोटे भांगी देले मु ऑलरेडी फाइन और डिडक्शन कहि कि आसली सिट स्टार्टिंग रे तमरा फाइन डिडक्ट करा गला हैला ताहा हैले सेटा ऑथराइज्ड हबो बट फाइन केते डिडक्ट करिवो 3% डिडक्ट करिवो नॉट मोर देन दैट 3% of your wages हैला डिडक्शन फॉर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी डिडक्शन कोथरे हबो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी तमे एब्सेंट रहि गेले ड्यूटी ड्यू विदाउट एनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नोटिस कि कोन हैला ना डिडक्शन कोन कले अ ग्रुप ऑफ पर्सन गोटे ग्रुप कोन कले पूरा विदाउट नोटिस त माने कोन कले एब्सेंट रहि गेले हैला जदी गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन विदाउट एनी नोटिस एब्सेंट रहि गेले ताहाले से ग्रुप रे सपोज आमे कहबा एब्सेंस फ्रॉम इट मे बी केते दिन केते जण 10 जण खंड एब्सेंट रहि गेले ताहाले कोन करिवो इट इज द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द वेजेस केते दिन पर्यंत से वेजेस डिडक्ट करि परिबो सो सेही दिन रे से वेजेस काटि परिबो 2 दिन पर्यंत से वेजेस काटि देबो कारण से दिन रो प्रोडक्शन पूरा बंद हे गेला सो दिस इज द एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉसेस ऑलरेडी मु कहिची डैमेज कला लॉस कला सेति पय तमरो डिडक्शन हबो केते डिडक्शन हबो एक्चुअल अमाउंट से प्रोडक्ट रो प्रेजेंटली एक्चुअल अमाउंट से प्रोडक्ट रो केते अछि से अनुसार तमरो डिडक्शन हबो प्रति मंथ रे से 50% तमरो वेज रो डिडक्ट करिवो हैला डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन लाइट फैसिलिटी देछि हां ए जो उत्कल यूनिवर्सिटी हाउसिंग फैसिलिटी देछि हाउसिंग फैसिलिटी रे कोन प्रति हेलो हां मैम डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इज 15% फ्रॉम द सैलरी नहीं सेटा तो 15% कहा जाउनी सेटा कहा जाउची गोटे दिन रो वेज तमरो डिडक्ट हे जिवो तमे जो दिन आसिलोनी से गोटे दिन रो वेज तमरो डिडक्ट हे जिवो मैक्सिमम पीरियड
तुमको पनिशमेंट दबा पाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कौन करिवो कहबो कि मु 10 दिन पर्यंत तमर वेज काटी देबी 10 दिन पर्यंत वेज देबनी सेमती ही परिबनी मैक्सिमम 8 दिन 8 डेज पर्यंत से तमर वेज काटी देबो जदि तुम ग्रुप रे रही गलो ग्रुप रे पूरा समस्ते धर आमर ऑर्गेनाइजेशन कोन करची पिला माने गोटे गोटे बड़ इवेंट ऑर्गेनाइज करूची हला तो आमे राग रखिगिरी से इवेंट दिन केही भी आसलेनी अरे से इवेंट को ऑर्गेनाइज करिवो किए से सब केही आसलेनी ग्रुप सब रही गले चिंता करंतु सिचुएशन कोन हबो से आमर गोटे टार्गेट अछि आज एति आमे सेल आमे दबा आमर काहा को सब आमर मार्केट रे सेल करबा आमे एति से लोक को टार्गेट देचे एति दबा केही आसलेनी से दिन टोटली पनिशमेंट दबा पाए हैला तो सेही क्षेत्र रे एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द अमाउंट एम्प्लॉयर राइट्स बनोची से पूरा से डे रो वेज को डिडक्ट कर दबो टोटली दबन हैला डिडक्शन कर देला ता छडा अप टू 8 डेज पर्यंत से मध्य स्टेप नहीं परिबो 8 दिन पर्यंत नॉट मोर देन दैट हैला तो एटा गला एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी डैमेज और लॉस तमे कल केते परसेंट कोन म ऑलरेडी कहि देछि हाउस अकोमोडेशन उत्कल यूनिवर्सिटी घर देछि हैला घर सहित इलेक्ट्रिसिटी देछि इलेक्ट्रिसिटी सहित पानी देछि वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी हाउस ए सब पाई बोली प्रति मंथ रे केते मु डिडक्ट करबी एतिकी टंका तम सैलरी रो वेजेस रो डिडक्ट करबी यस इट कैन बी दैट इज द ऑथराइज्ड हैला डिडक्शन फॉर सर्विस जदी किछि सर्विस दउची तुमको किछि गोटे फैसिलिटी दउची सर्विस दउची से थ्रू मध्ये से डिडक्शन करि पारिबो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स एग्जांपल ऑफ सर्विस मैम एग्जांपल ऑफ सर्विस सर्विस रे धर तुम कोन कछि गोटे गाड़ी सहित गोटे ड्राइवर देछि हैला गोटे कार देछि ता सहित गोटे ड्राइवर देछि ए जो कार रो ड्राइवर रो पैसा किए दबो तमे सिना मासु को एन्जॉय कर देला पेट्रोल पके की कार रो ड्राइवर रो पैसा तो पुनी रिकवरी होबो ना ड्राइवर को तो पैसा दिया जिवो ना But ma'am, that will be provided by the company also. कंपनी जो प्रोवाइड करूची कि सुनो तो कंपनी तो घर भी प्रोवाइड करूची सब प्रोवाइड करूची कंपनी किंतु मंथली हाउस रेंट अकोमोडेशन हाउस रेंट अलाउंसेस करिकी से सेतिकी काटिबो एचआर रे हां सेही जो फैसिलिटी देला सर्विस देला आपनकर से थ्रू मध्ये आपनको काटिबो डिडक्शन करिवो केते अमाउंट आपनकर पर मंथ रे सेठू मु काटिबी डिडक्शन हबो सेठ किछि जदि आपनको से टाइप रे सर्विस प्रोवाइड कले हैला रिकवरी ऑफ एडवांस रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांस आपण किछि उठै चंती ऑर्गेनाइजेशन एडवांस केते नै चंती आपनकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनुसार आपनकर आपण पाउचंती 10000 वेजेस आपण कहे मते 5 लाख टंका टिके सर एडवांस दैथिबे मु गुटे मोर जियो को बाहागर करेबी हेई परिबनी सेमती आपण को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनुसार आपण को एडवांस दिया जिवो धरंतु आपण 10000 पाउचंती आपणकर एडवांस केते नै परिबे ना 4 टाइम्स ऑफ योर वेजेस 10000 पाउचंती माने आपण 40000 पर्यंत वेजेस नै परिबे 4 टाइम्स ऑफ योर वेजेस हैला जनरली 3 टाइम्स दिया जाउची किंतु 4 टाइम्स पर्यंत आपण आपनको वेज रो एडवांस नै परिबे तो जो एडवांस नेबे सेटा आपणकर रिकवरी करा हबो प्रति मंथ रे तार पूरी क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन सब अछि के आपण कहबे कि मु मासु को 1000 करिकरी देबी जो 40000 सर 4 वर्ष रे नाइ सेमती ही परिबन आपण जहां भी एडवांस नेबे यू हैव टू आपण से एडवांस को केते दिन भितरे रिपे करिवे 18 मास भितरे 18 मंथ्स भितरे आपणकर जो एडवांस नैथिबे ताको हमें रिकवरी करिवो 18 मंथ्स भितरे आपण को मिनिमम 3 टाइम्स आपण को सैलरी मैक्सिमम 4 टाइम्स आपण को सैलरी आपण को हम एडवांस आकर दे परिबो हला जहां आपण को वेजेस अछि रिकवरी ऑफ लोन्स किछि लोन नै चंती जेमिति आपण बैंक को देइथांते सेमिति आपण को लोन मध्य आपण बैंक रो नैथिला आपण लोन रिपे करथांते ना आमड मध्य सेमिति लोन रिपे करा जिवो एडवांस ऑफ इनकम टैक्स प्रति मास इनकम टैक्स कटुची हमर गोटे सर्विस टैक्स काटी दोची प्रति मास रे 200 टंका लास्ट रे इनकम टैक्स काटी दोची वर्ष शेष रे केते इनकम हैला कोन हैला वर्ष शेष रे इनकम टैक्स पूरा काटी देला प्रति मास रे सर्विस टैक्स 200 टंका लेखा काटुची हैला एई जो सर्विस एई जो कहउतिले ना कोन सर्विस दोची एई सर्विस 200 टंका लेखा प्रति मास रे सर्विस टैक्स लेखा होची हमर काटी देला कोन सर्विस दोची हमक जहां सर्विस दोची हैला इनकम टैक्स रो वर्ष शेष रे इनकम टैक्स काटी देला इनकम टैक्स एक्ट अनुसार से कटा हबो केते काटिबो केते एक्सेस अछि आज पर इनकम टैक्स एक्ट हैला डिडक्शन फॉर प्रोविडेंट फंड प्रति मंथ रे प्रोविडेंट फंड को डिडक्ट हो जाउची केते होची सेटा हम डिडक्शन प्रोविडेंट फंड रे पडिबा मोर प्रति मंथ रे म बेज रो डिडक्ट कर दोची प्रोविडेंट फंड को एंड एम्प्लॉयर मध्ये इक्वल अमाउंट प्रोवाइड करूची हैला
किछि डिडक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डर देथिला दी जनकर द डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ दी पार्टीज कोर्ट ऑर्डर देला वर्कर से दी फेल कला एंड कोर्ट ऑर्डर देला वर्कर टू एतिके अमाउंट डिडक्शन करिवो सेटा ऑथराइज्ड डिडक्शन एंड डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस हमर ईएसआई नागो को पढ़िबा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हैला से ईएसआई रे किछि काटिला लाइफ इंश्योरेंस पई किछि काटिला जनरल इंश्योरेंस पई किछि डिडक्ट कला एज पर द जनरल इंश्योरेंस एक्ट अनुसार एक्ट अछि सबुरो इनकम टैक्स एक्ट इंश्योरेंस एक्ट सबु से अनुसार जदि किछि डिडक्ट कला दैट इज आल्सो ऑथराइज्ड आउरी अछि बहुत सारा जोटा कि मु आपनकर प्रोमिनेंट डिडक्शन आका भितरे कवर करा जाउछ एंड जदि हमर करबा डिडक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड को जदि किछि डिडक्ट कला कोरोना टाइम रे हमको न पचारी के हम वेज रो हम सैलरी डिडक्ट करा आइगला हमको पचारा भी गलानी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म मैम जेटा प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड को गला किछि स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नेशनल फंड को किछि गला प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड कहि के हम सैलरी कटा आइगला चीफ मिनिस्टर स्टेट फंड को कहि के हम सैलरी कटा आइगला ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना टाइम रे सो सेमती जदि किछि इमरजेंसी आसिला नेचुरल नो डिजास्टर टाइम रे धरंतु फ्लड हैला धरंतु अर्थक्वेक हैला तो आमर वेजेस रु से डिडक्ट करिवो सेटा दैट इज कंप्लीटली ऑथराइज्ड सेडी आपण मना कर परिबेन एक तुम वेज रु काई डिडक्ट करलु सेटा प्राइम मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट नेशनल फंड को से सब जाई परिबो को होइना पिला माने मैम डिडक्शन फॉर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैन यू रिपीट इट अगेन मैम deduction for order of the court some dispute between the both the parties the dispute between workers and management and the order by the court no the worker it may be lose the that particular case no and due to this reason the court as per the order by the court the employer will collect such amount by the workers ठीक है such amount by the workers and that deduction it is the authorized बुझी गले ना Okay. एना now it is clear यस मैम किछि गोटे आपण को मो भितर डिस्प्यूट चलथिला ना डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी you are the employer I am the workers so between you and me and I lose the that basically what in case of the that hearing I lose the case so at that particular moment the court will decide no the worker have to provide such amount towards the establishment so as per the order of the court the employer will deduct and the employer will collect that amount to the workers that amount we can call as a order of the court and that is authorized court law आसीगला माने सब authorized रेडी आउ किछि unauthorized आसीला हला बुझी गले एति की क्लियर ना स्टूडेंट्स Ma'am, any specific percentage required for deduction of provident fund, ma'am? हाँ provident आउ से हमें provident fund act रे पढ़िबे ना yes how much amount the provident fund act said how much amount the employer will deduct every month mo salary deduct hochi समस्त को salary deduct hochi every month and it is contributory how much employer will provide how much worker will contribute each month and eta कोठी deposit अब सेटा हमें provident fund act रे पढ़िबा हैला provident fund act 1952 and miscellaneous act ठीक ना पिल्ला माने क्लियर ना Yes, ma'am. सेटा हमें सही एक्ट रे पढ़ी एतिकी मन रखिबो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रे हैला पूरा एतिकी मन रखी आको कवर करिवो मिनिमम वेजेस छोटा एक्टा मिनिमम वेजेस एक्ट सुनो पिला माने मिनिमम वेजेस कहूची the organization may be making profit may be facing losses minimum wages act 1948 minimum wages केबे आसिला 1948 रे आसिला एटी ऑर्गेनाइजेशन कहिला कि the organization may be making profit may be facing losses इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिला मु कहबी कि भाई देखो मोर जम्मा इनकम नाही रे पूरा ए मास रे बहुत द ऑर्गेनाइजेशन सफर्ड लाइक एनीथिंग हां फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो मु पैसा देई परिबिनी ए मास रे तमे देई परिबन तो ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दियो गवर्नमेंट कहिला जदी देई परिबनी ऑर्गेनाइजेशन काई रखिछ बंद कर दियो क्लोज कर दियो घर को पळा if your organization is there may be making profit may be facing losses
you have to pay minimum wages to the worker. तारू जदि अधिक तुम दउछ तो बहुत भल कथा. More than that तुम केते भी देई परिबो तमरो वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, but less than that दबाक हबो नाही. As per the Minimum Wages Act, 1948, you have to provide minimum wages to the worker as fixed by the Indian Constitution. जोते जेते हमर अमेंडमेंट हे जाउची से अनुसार तुमे प्रोवाइड करि का जीवो. बोनस रो जहा क्राइटेरिया मिनिमम वेजेस रो सेही क्राइटेरिया ए सब क्राइटेरिया समान. तो इथे हमें वेज कहा को कहबा सेम. वेज मींस ऑल रेम्युनरेशन capable of being expressed in terms of money. जोटा को मनी को टर्न करूथबो वेज सेटा को हम एठी वेज बोली कहबा. ऑब्जेक्टिव कोन आसला? बहुत ऑब्जेक्टिव नै कि पेमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आसला. सो एठी कोन ना वेज हमें शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन कैन फिक्स मिनिमम वेज बेस्ड ऑन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. एट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कोन मैंने जस्ट कहबी हैला. टू प्रोवाइड मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स, वीकली रेस्ट दबा, ओवर टाइम दबा, सित्रा में वेज पाउचे. मु ऑलरेडी पेमेंट आ वेजेस रे पढै के आसली. ओवर टाइम रे वेज पाउचे, रेस्ट आवर रे वेज पाउचे. हां आमे कोन कोचे ना डेली वर्किंग आवर्स रे वेज पाउचे. मैक्सिमम ए सब अगर आमे वेज प्रोवाइड करबा, ए सब कोनोसी डिडक्शन कर परिबा नाही. जदि डिडक्शन हला दैट इज अनऑथराइज्ड, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस आमे कोन करबा ना वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, आमे प्रमोट वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्कर मानकर वेलफेयर पय आमे चिंता करबा, इंडस्ट्री चिंता करिवो हैला. ए सब करिके हमर आसला मिनिमम वेजेस एक्ट 1936. तो पिला माने तो आमे एठी कोन करबा, जो मिनिमम वेजेस 1948 सॉरी 36 कहूची, मिनिमम वेजेस 1948 आसिला. दिस मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पास at the year of 1948 आमे जानिले. and to it extend to the whole of India. whole of India माने सब जगह को, every industry, every establishment where even one person is also working. गोटी लोक भी जदि से इंडस्ट्री काम करूची ताको मध्ये आमे आगुरु पढी पढी कोन आसले 10 जन काम करथिबे, 20 जन काम करथिबे. हां एति जन काम करथिले से एप्लीकेबल हो एडी नै. एटा मिनिमम वेजेस हला, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर इवन वन पर्सन इज वर्किंग. गोटी लोक काम करथि ताको मध्ये एटा एप्लीकेबल हो. इट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सर्वेंट आल्सो. आम घरे जो डोमेस्टिक सर्वेंट आछंती सेमानक पई मध्ये एटा एप्लीकेबल हो. गोटी लोक पई समस्तक पई मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल हे गल. एंड मिनिमम वेजेस बेसिकली 1948 याकू कोन कला दुईटा शेड्यूल रे, जोटा के शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मु कहली तो याकू कोन कला ना पार्ट 1 पार्ट 2 दुईटा शेड्यूल रे याकू डिवाइड कर देला. कोन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 पार्ट 2 कोन पार्ट 1 ना पार्ट 1 इट कवर्ड all the establishment, jette establishment achanti, even one person is working, employing a one person hela engage achi se establishment re. पार्ट 1 रे समस्त सेथरे कवर होबे. पार्ट 2 पार्ट 2 मैडम कोन कवर होची सी जते तमे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जीवो सेठी पार्ट 1 पार्ट 2 रो लिस्ट दिया जायछि. को इंडस्ट्री पार्ट 1 रे कवर होची, को इंडस्ट्री पार्ट 2 रे कवर होची. जदि हमें कहिबा सपोज मु कहूची किछिटा इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल रियली रे, जेमति कि हमें कहिबा पार्ट 1 रे मैम कोन कवर हैला, एवरी राइस मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल, जत्ते सब मिल आसी गला, ऑयल मिल जत्ते सब मिल आसीला. हां एम्प्लॉयमेंट इन एनी वर्कर वर्किंग इन दी कोठी काम करथबो ना बेसिकली टोबैको, बीडी, जो टोबैको इंडस्ट्री, बीडी, सिगरेट, निकोटिन जत्ते सब आसी गला, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सब जत्ते आसीला से सब रे जो माने काम करथिबे प्लांटेशन, जो माने काम करथिबे प्लांटेशन आसीला माने कोन रबर, टी, कॉफी, जूट ए सब आसी गला. एम्प्लॉयमेंट इन एनी बेसिकली हमें कोन कहिबा ना जदी काम करथिबे कोठी ना लोकल अथॉरिटी. एई गोटे लोक कोन करछि रखिछि, गोटे लोक माने जो छोटे छोटे ग्रोसरी दुकान काम करछि, ग्रोसरी दुकान रहउछि, जहां भी सब दुकान सब रहउछि से सब रे मिनिमम वेजेस कंपलसरी हैला. एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंस्ट्रक्शन, जदी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज ए सब जदी आसिला हैला. एम्प्लॉयमेंट इन स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थर बाडौचंती, स्टोन ब्रेकिंग काम करचंती, एमिति कहि करी से गोटे बड्ड लिस्ट देछि पार्ट 1 ताको जदी मन रखिबा को अछि जीव सेठी मन रखिबो हैला. एंड पार्ट 2 ड्यूल एम्प्लॉयमेंट पार्ट 2 हैला कवर्ड
all schedule employ part 1 covered every industry, part 2 exclusively for agriculture को एठी cover कर देला एग्रीकल्चर रे जेते एग्रीकल्चर आछि जेते अछि तमर एग्रीकल्चर रे जेते जिंस सब अछि सब आग जेमते डेरी कल्चर डेरी फार्मिंग हां जेमते हमें कहबा कि कोन कहलो हमर फिशरी डेरी जेते अछंती हॉर्टिकल्चर कौन कौन जिते सब अच्छा एग्रीकल्चर रे से समस्ते कवर रहा पार्ट 2 रे इवन वन पर्सन इज वर्किंग देन इट इज अंडर द पर्सन विल कवर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट तमे ताको मिनिमम वेजेस दबा पई बाध्य तो एठी पिला माने जदी हमें देखिबा मिनिमम वेजेस हमें फिक्स करबा केमिति ना देखो एठी पर्टिकुलरली हमें कहबा देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स चारि कैटेगरी रो वर्कर्स अछंती और चारि कैटेगरी रो एठी मिनिमम वेज फिक्स करा जाउची चारि कैटेगरी 4 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स कौन ना स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड हाई स्किल्ड चारि प्रकार कैटेगरी वर्कर एठी हमरा आसिले धर आमे गोटे बिल्डिंग कोचे सेठी चारि प्रकार वर्कर कौन पूरा जो अनस्किल्ड वर्कर हैला जो माने सब माटी पत्थर इटा सब बहुचंदी से माने पूरा अनस्किल्ड आसी गले मिस्त्री जी से आसी गला पूरा हाई स्किल्ड हैला अनस्किल्ड हाई स्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड ये सब चारि प्रकार कैटेगरी रे लोक रहिले चारि प्रकार कैटेगरी लोक अनुसार 4 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स एंड 4 कैटेगरी ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रति स्टेट रे as per the cost of living as per the standard of living as per the cost of living the wage it may be आजिका डेट रे सेंट्रल वेज फिक्सेशन आसी जाउची जोटा कि गोटिए वेज सब स्टेट को कवर करिवो बट अर्लियर कौन थिला ना अर्लियर ई स्टेट फिक्सिंग देयर वेजेस जदि तमे इना जीवो देखिबो हमर स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट हाउ मच वेजेस फिक्स्ड टुवर्ड्स द वर्कर आसे जीवो चारटा कैटेगरी ना तमे से थाई कि देखि परिबो चारटा कैटेगरी आसीबो स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर सेमी स्किल्ड वर्कर हाई स्किल्ड वर्कर बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एई अनुसार वेज फिक्स करिछि प्रतिदिन एतिकी गोटे लोक को दबागु पड़िबो हैला तो सही अनुसार कौन करा जिवो वेज फिक्सेशन करा जी फॉर ईच स्टेट एंड केमती हमें प्रोवाइड करिबा वेज को ना फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ वेज को जाउ जी ना द वेज इट मस्ट बी प्रोवाइड टाइम रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम गारंटेड टाइम रेट सिस्टम ओवर टाइम रेट सिस्टम चारि प्रकार हमें वेज प्रोवाइड करि परिबा मिनिमम टाइम केते घंटा काम करछि हाउ मच टाइम आई एम स्पेंडिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा केते घंटा काम कली सो सेति इफ आई विल स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम टुवर्ड्स योर एस्टैब्लिशमेंट आसले एतिकी टाइम काम करी गले ताले तुम मते केते बेस दबो दैट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट and you have to provide this much of wages not less than that more than that apna dei paranti you are so kind you are so means your greatness towards that particular person right minimum piece rate system piece rate kon कहउची रे एडी टाइम आसलानी पीस आसला मु एतिकी जिंस को तमरो काम कर देबी ए एरिया टा को तमरो मु सफा कर देबी हैला ए एरिया टा पूरा सफा करिया को से घंटे ही पारे 2 घंटा ही पारे 2 दिन ही पारे हैला तो हले तमे मते केते टंका दबो फिक्स कर दियो मिनिमम एतिकी रेट वेजेस अनुसार ए पीस रेट एतिकी मु तमरो काम करबी केते टंका तमे मते प्रोवाइड करबी दैट इज द मिनिमम पीस रेट सिस्टम गारंटेड टाइम रेट गोटे दिन मोर एति काम लागिवो तू जदि गोटे दिन भीतर कवर कर देलु ताले मु तते 1000 टंका देबी गारंटी दउची गारंटेड टाइम रेट गारंटेड रेट एतिकी जगह कवर करिवो एतिकी दिन एतिकी टाइम एतिकी आज दिन भीतर जदि तू कर देलु मु तते 1000 रुपीस देबी गारंटी देली ओवर टाइम रेट more than a minimum time no fixed by the Indian constitution 8 hours we can spend towards the organization more than that jodi mu kam kochi it can treated as a overtime and in overtime one wages extra you have to provide 8 घंटा रे मु अधिक गली ताहले मते one wages extra तुमे प्रोवाइड करिवो तार गाइडलाइन क्राइटेरिया सब फिक्स होइछि 8 घंटा केते अधिक करिवो कोन करिवो कोन मिनिमम टाइम 8 घंटा हेले कोन मु ओवर टाइम रे 16 घंटा काम करबी ना कोन थिबी ना काली आउ मु तो संसार रू उठी जाइथिबी 16 घंटा काम कला ना कोन काली आसीबी ना काम करबी ना ता पे क्राइटेरिया फिक्स होइछि केते घंटा एक्स्ट्रा तुमे काम करिवो हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी कैन ट्रीटेड एज ओवर टाइम सब फैक्ट्री एक्ट रे लिखा होइछि हैला जो थिरे कि सही ओवर टाइम रे वन वेजेस एक्स्ट्रा पाइबो सो एई अनुसार वेज फिक्सेशन करा जाइछि पिला हैला सो एई अनुसार वेज फिक्सेशन होइछि एई अनुसार वेज मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि
time rate, piece rate, guaranteed time rate, overtime rate, and a schedule employment. Part 1, part 2. बुझिलो कि पिला माने? Yes, ma'am. Friends, अच्छा ताहले कोन adult जति की पाइबो कोन child जति की पाइबो? Wage ना child, adolescent and adult ସେମାନଙ୍କର wage भी different ଆସିବ. Child ପାଇଁ ଏତିକି, adult ପାଇଁ କାରଣ adult ଯେତି କାମ କରିବ child ଯେତି କାମ କରି परिबो कि? ନାଇଁ. So child, adolescent, adult ए टाइप रो मध्ये हमर ये करिवो. Locality to locality vary करिवो. State to state vary करिवो. राइट जोटा ओडिशा गवर्नमेंट फिक्स करছে সেটা महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिक्स करते बोली किछि माने नाही बट नेशनल वेज एक्ट कोटे आसुची जोटा कि पूरा नेशन को गोटिए वेज फिक्सेशन करा जिवो. क्लियर पिला माने? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स समस्ते अन्य माने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके केमिति फिक्स करिबा सी पिला माने ए जो वेज की फिक्स करूची मैम वेज ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिक्स करूची वेज ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिक्स करूची but the government adopted some technique to fix the wages कौन ना दुईटा मेथड एठी हमर अडॉप्ट करा जाउची से दुईटा मेथड कौन ना कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड थ्रू कमिटी मेथड एंड थ्रू नोटिफिकेशन मेथड कमिटी गोटे अडॉप्ट करा जिवो through committee method and through notification method the government can fix wages towards the particular state or nation कौन कमिटी मेथड कहूची कि हमर जोटा कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रहिबे कमिटी रे सी कमिटी मेथड इज अ फास्ट कांसेप्ट एंड नोटिफिकेशन मेथड इज अ स्लो प्रोसेस कमिटी मींस बेसिकली इट मे बी द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रहिबे कमिटी सब कमिटी फॉर्मेशन हो डिफरेंट लोकालिटी बेसिस रे गवर्नमेंट कोन करिवो स्टेट गवर्नमेंट तार वेज रिवाइज करिया को चाहछि 5 वर्ष रे थरे मिनिमम ताको रिवीजन करिया कंपलसरी नॉट मोर देन दैट वेज तमे जदी रिवाइज 5 वर्ष रे थरे निहाती करिवो अधिक टाइम करि परिबो बट 5 वर्ष रो अधिक होबा को हबनी हैला 5 इयर्स रो नॉट मोर देन 5 इयर्स तो एटी गवर्नमेंट कोन करिवो स्टेट गवर्नमेंट किछटा कमिटी फॉर्म कर देबो एडवाइजरी कमिटी जे कि एडवाइस देबे का को स्टेट गवर्नमेंट को एने लोकालिटी बेसिस रे हैला से जो कमिटी फॉर्म करिवे द कमिटी विल एनालिसिस द सिचुएशन प्रेजेंट एंड करंट सिचुएशन ऑफ द व्हाट द पीपल किए ना पर्टिकुलर को एरिया को नेकी हमें कोन कवर करिवा सो सपोज हमें कहबा कि स्टेट लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे लोकालिटी लेवल रे पंचायत लेवल रे हमें कोन करिवा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि से कमिटी विल इन्फॉर्म टू द all the things towards the state government and basing on the committee advisory committee the committee advice the state government will take the decision and fix the minimum wages towards the state same things it can implement in the central level सब state government locality to make is advisory state advisory board se mane inform karibe state center ko and center will take the decisions state advisory board center advisory board they will fix the wages as per analysis the current situation of the state and the nation हैला सो से अनुसार हमर वेज फिक्सेशन हो एंड इट इज अ क्विक प्रोसेस बट जो नोटिफिकेशन आसी गला पिला माने सार आसी गलेनी की मैम एबे क्लास हबनी गोटे बेर को हबो हैं मैम एबे क्लास हबनी गोटे बेर को हबो मैम गोटे बेर आज क्लास हबो सारंकर आगे मैम आगे एना हबनी नहीं मैम हाँ मैम अच्छा। जस्ट मेसेज आसला ग्रुप जस्ट आसला कि गोटे बेले क्लास नेबे कहले आगे मैम अच्छा हो हो मैं एटा सार दे की क्लोज कर दोची तो एटा हला कमिटी मेथड पिला माने हला तो एटा में कोन करले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिबा कमिटी पंचायत लेवल रो डिस्ट्रिक्ट लेवल रो स्टेट को करिबा स्टेट कोन करिबा नेशन को करिबा से अनुसार हमरो डिसीजन क्विकली हमें नै जिबा इट इज फास्ट मेथड अच्छा स्लो प्रोसेस कोडा स्लो प्रोसेस रे कोडा जिवो नोटिफिकेशन मेथड कोन मैडम सी नोटिफिकेशन मेथड कोन करूची कोन करिवो गवर्नमेंट कोन करिवो गोटे तो एडवाइजरी बोर्ड रहिले से माने ग्रुप ऑफ पीपल they will give advice to the government सेटा रहिले ता छडा government will give notice to the public government will give notice to the public general public हला and collect the public suggestion सब थर होची सेटा नोटिफिकेशन मेथड आसला माने एटा को अडॉप्ट करा जाउची पब्लिक सजेशन देबे थ्रू
केमिति सेमानकर थिबो गोटे वेबसाइट सेमाने तांको पब्लिक से वेबसाइट थ्रू रो तांकर सजेशन को देबे सेति पय 2 मास टाइम दिया जिवो न्यूज़पेपर रे बाहरिबो यू कैन गिव योर सजेशन टुवर्ड्स योर वेजेस सो सेमाने से जो वेबसाइट जाइकरी सेमानक सजेशन पुट करिवे 2 मास सेति पय टाइम दिया जिवो हैला 2 मास एडी हे गला 2 मास परे से वेबसाइट बंद हे जिवो हैला जहां सब सेमानकर पब्लिक रो व्यू आसिला व्यू मिसिकी एमाने कोन करिवे 2 मास परे आउ 3 मास माने टाइम नेबे टू एनालिसिस द सिचुएशन हैला एनालिसिस सिचुएशन करियो केते दिन टाइम नेबे आ सब आगो पब्लिक रो पुनी सजेशन को पुनी एनालिसिस तो करा जिवो ना तो सेति पय 3 मास टाइम निया हबो सो सेई 2 मास ए 3 मास 5 मास एडी चली गला आफ्टर 5 months the government will take the decision and whatever may be the wage fixed by the government based on the public view as well as the committee view that it can be implemented in the particular state रे सही अनुसार कोन हबो implement करा जिवो हैला तो एटा हला पिला माने कमिटी मेथड as well as the notification method through central and state level रे हमर ए टाइप रो कोन करा जाउची मिनिमम वेज फिक्सेशन करा जाउची गवर्नमेंट मन इच्छा करि परिबनी गवर्नमेंट समस्तकर डिसीजन नबो एम्प्लॉयर नबो एम्प्लॉयर नबो वर्कर नबो जनरल पब्लिक रो नबो कमिटी रो डिसीजन नबो समस्तकर नबो हैला सो ए टाइप रो कोन करिवो हमर वेज फिक्सेशन हबो एंड इम्प्लीमेंटेशन हबो तो एठी मन रखिबो कोन पिला माने वेज कोन व्हाट डू यू मीन बाय वेज एठी म तुमको देखैली स्टार्टिंग रे इंट्रोडक्शन वेज कोन ऑब्जेक्टिव कोन केमिति फिक्सेशन करा जाउची पार्ट 1 पार्ट 2 सेटा को मने रखिबो पार्ट 1 रे कोन कवर होची पार्ट 2 रे फिक्सेशन एंड रिवीजन मिनिमम वेज को वाइज हमें करूचे तापर आसला कोन डिफरेंट रेट सिस्टम जेंति कि हम आवरली डेली मंथली करिबा चाइल्ड पॉइंट डिफरेंट एडोलसेंट पॉइंट डिफरेंट एडल्ट पॉइंट डिफरेंट स्किल पॉइंट डिफरेंट ऑन स्किल पॉइंट डिफरेंट सेमी स्किल पॉइंट डिफरेंट हाई स्किल पॉइंट डिफरेंट ये सब मने रखिबो एठी देन आसला मेथड कोन ना कमिटी मेथड सब कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड से अनुसार हमें कोन करूचे ना वेज को हमें फिक्सेशन करूचे एंड इंप्लीमेंट करा जाउची क्लियर पिला माने मैम टिकते होचे नोटिफिकेशन के आउटरे कहि देबे केना नोटिफिकेशन हैला नोटिफिकेशन हैला गवर्नमेंट कोन करिवो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करतबो न्यूज़पेपर रे एडवर्टाइजमेंट देबो 2 मास सेति पय टाइम दबो जनरल पब्लिक को कहिबो एवरी पर्सन यू कैन शेयर योर व्यू हैला सब लोक तमे तम व्यू को शेयर करो एई वेबसाइट थ्रू रो जत्ते सब लोक थिबे तांके समान आमे भी मु भी तमे भी समते आमे हम व्यू को ओपिनियन को से वेबसाइट थ्रू रो आमे हम ओपिनियन दे परिबा सेटा केमति जानिबा मैम सेटा एडवर्टाइजमेंट रे आसीबो न्यूज़पेपर रे आसीबो एडवर्टाइजमेंट यू कैन शेयर योर व्यू थ्रू दिस वेबसाइट कहिकी ताले आमे हमर ओपिनियन बहुत टाइम रे खाली वेज फिक्सेशन रे कहउछ बहुत जगह रे गवर्नमेंट कोन करछ पब्लिक रो व्यू नउची आ पब्लिक व्यू नबा पय पूरा ओपन सब पब्लिक समान कर व्यू दे परिबे किछु जो डिसीजन नबा थिबो माने गोटे चेंज जानिबा को थिबो बहुत बड़ डिसीजन से पब्लिक रो मध्ये नबो जनरल पब्लिक रो सेति पय आफ्टर 2 मास तुमको टाइम दिया जिवो 2 मास तमे सब हम सब व्यू दे देले थ्रू पर्टिकुलर वेबसाइट थ्रू रो हैला तापरे कोन करा जिवो 2 मास परे 3 मास से एनालिसिस करिवो समस्त को व्यू को 3 मंथ टाइम नबो सेति पय गवर्नमेंट 3 मास ये 2 मास 5 मास 2 मास हमको टाइम देला 3 मास सी टाइम नेला 5 months परे से जो डिसीजन ता से नबो सेटा इंप्लीमेंट हबो पर्टिकुलर स्टेट और नेशन रे दैट इज द नोटिफिकेशन मेथड बुझिलो इना जियो यस मैम थैंक यू मैम ओके हैला तो तमरो मिनिमम वेजेस एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कवर हो गेला पिला माने 1936 एंड 1948 ए दुटा को मन रखिबो टुमारो आई विल डिस्कस आउ दुटा एक्ट मिनिमम तमरो वेज रिलेटेड एक्ट कवर कर देले हम एठी तापर हमें पळेबा कोठी की ना ग्रेच्युटी आउ मेटर्निटी ए सब कोन सब काली के हमें कवर करबा हैला चलो थैंक यू सो मच बाय बाय मु भी कॉलेज बाहर थैंक यू मैम हैला ओके थैंक यू मैम